ओके, आज हम बात करते हैं कि कितने तरीके से अपन CSS को HTML के साथ यूज़ कर सकते हैं। CSS कितने तरीके से, बेसिकली देखा जाए तीन तरीके हो सकते हैं। तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है CSS को यूज़ करने का एज ए एक्सटर्नल स्टाइल शीट। आप एक एक्सटर्नल CSS फाइल बना दीजिए, उस एक्सटर्नल CSS फाइल के अंदर आप सारे के सारे CSS रूल्स लिखने चाहिए एज एक बात है फॉर्मेट में सिलेक्टर, देन उसके बाद सिलेक्टर आ गया, देन उसके बाद में उसकी लिखा है प्रॉपर्टीज आ गई, कौन सी प्रॉपर्टीज को आप चेंज करने जाता है CSS प्रॉपर्टीज, देन उसके पॉसिबल वेब एक के बाद एक सेमीकोलन सेपरेटेड वे में ऑपरेट किया इसमें जाइए। और इस तरह से देखा है तो आप सारे के सारे सेक्टर्स के लिए एक एक्सटर्नल CSS फाइल बना दीजिए और उस CSS फाइल को आप आपके HTML पेज के साथ लिंक कर दीजिएगा। तो ये आपका पहला तरीका हो सकता है जिसमें देखा है तो एक्सटर्नल CSS फाइल के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका देखा है तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकता है, मैं इसी से बात करूँ। पहली तरीका ये हो सकता है कि अगर आप एक्सटर्नल CSS फाइल बनाएंगे तो उसमें ये फ़ायदा होगा आपको कि आप एक से ज़्यादा HTML पेजेस के अंदर HTML पेजेस के अंदर आप उनको देखा एक से ज़्यादा HTML पेज के अंदर आप सेम CSS टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा फायदा रहेगा। मतलब कि अगर आपने एक जगह का चेंज किया, मीनिंग ये हुआ आपका कि अगर आपने एक फाइल के अंदर एक CSS टूल्स को चेंज किया तो आपके सारे के सारे वेब पेजेस देखते हैं जिसके अंदर आपके सारे के सारे वो वेब पेजेस जिसमें कि आपका ये CSS एक्सटर्नल CSS यूज़ की गई सबके अंदर वो इफेक्ट में आ जाएगी। उसके अंदर सब कुछ सब एक जगह पर चेंज करने पे सारे के सारे वेब पेजेस में यूँ कहा जाए कि पूरी वेबसाइट में पूरी सब जगह पे वो CSS टूल्स अप्लाई हो जाएंगे। ये पहला तरीका हो सकता है। और दूसरा अगर बात करें फ़ायदा हुआ आपको, नुकसान की बात करें, नुकसान इसमें यूज़ कर कि कॉन्स की बात करें तो कॉन्स क्या हो सकता है। कॉन्स में बात करें तो इसमें ये होता है कि आपको जब आपका वेब सर्वर से आप किसी HTML फाइल को डाउनलोड करते हैं, HTML फाइल को ओपन करते हैं तो उस समय आपका HTML के कोड आपके सर्वर से आपके क्लाइंट साइड पर आपकी मशीन पर जाता है। अब अगर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की बात किया, एक्सटर्नल CSS की बात किया तो उसमें आपको ये दिक्कत आएगी, आपके साथ में आपको एक HTML पेज के साथ में CSS फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो देखा है तो एक्स्ट्रा डाउनलोडिंग टाइम फॉर स्टाइल शीट्स रिक्वायर्ड, ये आपके लिए दिक्कत आएगी। इसमें थोड़ा सा इतनी सी दिक्कत है और कुछ नहीं। बाकी देखा तो फायदे हैं आपके लिए कि आप इसमें एक ही फाइल के थ्रू आप मल्टीपल वेब पेज को गवर्न कर सकते हैं। ये आपका फायदा हुआ। इसको यूज़ करने की बात किया तो यूज़ करने के अपन एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक CSS फाइल क्रिएट कर ली। फॉर एग्जाम्पल हमने एक CSS फाइल क्रिएट की, इसके अंदर हमने तो बात की जो कि हमने बॉडी टैग के लिए उसका बैकग्राउंड कलर का चेंज कर देते हैं। अभी तो मैं अलग रूल्स लिखे हुए हैं। मैं आपको बात करते हैं दूसरे एक फाइल बनाते हैं जिसमें कि .css नाम से सेव करेंगे। नोटपैड में गया था, नोटपैड में गया कमियाँ और इसके बाद यहाँ पे टाइप किया बॉडी, देन CSS, उसके बाद बॉडी के अपने लिख देंगे ग्राउंड डैश कलर कॉलम, फॉर एग्जाम्पल से #039 is an hexadecimal format of representing the color. और बात किया है तो अगर फोरग्राउंड का जिसमें कि टेक्स्ट दिखने चाहिए उसकी बात किया तो उसके लिए आपने CSS प्रॉपर्टी उसी कलर जिसमें अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लैक यूज़ कर लिया ब्लैक। फिर दो एक मेरे जो रूल्स लिख दिया सिंपल से बॉडी के लिए हमने दो रूल्स लिख दिया कि बॉडी पेज में जो भी कंटेंट्स आएंगे बॉडी का जो बैकग्राउंड रहेगा वो आपको #039 के थ्रू जो हेक्साडेसिमल नंबर उसके थ्रू जो नंबर बन रहा है वो नंबर आपका वो जो फोरग्राउंड कर रहे हैं वो आपका रहेगा ब्लैक। ये सिंपल से मैंने कलर यूज़ किया। अभी CSS फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव एज में गया, मेरे जो डेस्कटॉप पे फोल्डर बना हुआ है CSS एग्जाम्पल करके उसके अंदर में यहाँ पे गया, यहाँ मैंने सेव एज टाइप रखा इसका। सेव एज टाइप में हमने उसको यूज़ किया फॉर एग्जाम्पल test.css सेव, हमारी फाइल सेव हो गई है। हम उसके बाद यहाँ से यहाँ गए और हमने इसको हमारी जो ऑलरेडी क्रिएटेड एक फाइल है HTML पेज, इसके अंदर हम जाके इसमें इसको लिंक अप कर दिया। इसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, लिंक टेक की जरूरत पड़ेगी। लिंक देन लिंक के बाद क्या जरूरत पड़ सकती है हमें देखना है तो इसमें हमें जो रूल्स देखें लिंक रिलेशन इस्टेब्लिश करना। रिलेशन किस टाइप की फाइल को आप एसोसिएट करना चाहते हैं, वो फाइल आपकी स्टाइल शीट टाइप की, इसलिए मैं रिलेशन बताया। रिलेशन स्टाइल शीट टाइप मतलब किस तरह की फाइल आपकी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, टेक्स्ट/CSS और फाइल का पाथ href
href in the sense text.css. जैसे कि बात किया text.css मेरी फाइल है, किसी फाइल को मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, जैसे मेरे को एच डी एस में लिख देता हूँ हमने लिख दिया स्विच हो जाके रिलेशन rel is equal to डबल कोट्स में s sheet then type is equal to text slash css then href is equal to double quotes text dot css. Because the css file is in the same directory where the HTML file it is, that's why we are using only the file name of .css file. Okay, now we add some text here. For example, IPS. Okay, we'll save it. अब इसके बाद हम देखते हैं कि वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं. ओके, background color of the home page is changed with the new color. It is declared by this is #039 and foreground color is black. IPS view is looking in a black color and this color is governed by this color property and this black. If we change this color, for example say red, and here it is 0 ABC hash. Component save and then refresh it. Okay, color is changed. So the thing is that you are using an external CSS file. You created an external CSS file in which you are writing some CSS rules for different type of selectors. Selectors could be your HTML text, or we have said classes, IDs, contextual selectors, etc. These are the various selectors by which you are selecting a particular element in the HTML page, and you applying the CSS rules for that selector. This is the main thing you are doing. Actually इसमें बात किया तो सर CSS रूल्स में एक्स्ट्रा डिफाइन किया. हम चाहे इसके साथ में कुछ ओल्ड एक्स्ट्रा रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फाइल क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल div share div, for example div here I write international by this only doing this we say that save it. How the section it is written in red color over here, and if we define the CSS property for this, for example say in test.css is created div id is id, for example id is equal to we say d1, for example d1. Now we create some rule for hash d1, id d1, hash d1, then opening and closing braces. We copy and paste this code here, and we save this, and color of the BCF. Okay, and then foreground color would be so hash 567. Then we check it. Okay, div is changed. The div is changed to different from the other web page, whole web page. Now we add some more CSS rules. For example, padding colon 5px for top and bottom, for top and bottom, and 10px for left and right. For left and right padding. Now we see what happens. Okay, this space is 5, this space is 5, top and bottom is 5, and left and right is 10.
Okay, this is the padding effect. And no, we say margin and margin, for example, margin colon 20 px and 10 px. Say this and now change. Okay, this is space outer the border, say padding. This line's outer is called margin. Margin means this. Okay. Now we say somewhere between, for example, border colon 1px solid and black color. Save this and see what happens. Border is shown over the div. Border is shown over the div. Okay. And now we say okay. This is for right now. If we can do this hash d1 colon over. When we over the mouse over this div, then what could happen? We change the background color only. We can change only background color. Say F A D. This color could be UV. Something different. Now when we over the mouse over this div, what effect? They will change. This change. Foreground and background both are changed when we over the mouse on the div element. Okay, this is the, for example, this is our simple. Now we check how this thing can be done with internal CSS. Internal CSS means document binding. Second thing by which you can use this CSS in a document is first thing is external CSS. Say for example you created external CSS file, then the link that external CSS file to the HTML page. And second thing is you include the CSS rules. You include the CSS rules in the same HTML page in which you are writing your HTML code. Okay, this is called document wide style or internal style sheets. In this you are creating a style tag in the head section of an HTML page. In the head section of an HTML page. Okay, अगर बात किया है कि इंटरनल डॉक्यूमेंट से क्या फ़ायदा हो सकता है, इंटरनल से बात किया तो आप पेज लेवल पे CSS रूल्स डिफरेंट बना सकते हैं पेज लेवल पे. और एक फायदा और हो सकता है इसमें कि अगर आप when you download a HTML page then you don't extra downloading a CSS file. You don't have to extra download a CSS file. This is the main advantage. You have to only download the one HTML page in which the CSS rules are also downloaded with it. Okay, so there is no additional downloading time for style information. And the cons की बात किया है कि अगर कुछ तकलीफ हो सकती है, नुकसान क्या होता है इसमें, need to reply style information for other documents. For example, if you want to create the same look and feel for the multiple web pages, then you have to write the same CSS rule for each and every web pages. Each and every page आपको हर एक वेब पेज के अंदर सेम की सेम रूल्स लिखने पड़ेंगे. ये आपको एक दिक्कत आएगी. तो अगर हम बात करो इस चीज़ में, ये तो अपना दो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हुआ. आप इसको यूज़ कर लेते हैं किस तरह से अपने इस चीज़ को सेम CSS रूल्स को हम HTML पेज के अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए बात किया तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी टाइटल के साथ में हेड सेक्शन के विद इन हेड सेक्शन यू हैव टू क्रिएट स्टाइल tag, extra style tag, style type is equal to text slash css, and the opening and closing, and between the opening and closing of the style tag you have to write all the CSS rules here over here. First thing, for example, we are now we copy and paste the same CSS rules, same CSS rules, copy and paste it here in the this there here in the head section. For example, say
CSS. Just close style. Delete the link reference to external CSS file so that these rules will be applied. However, they are pasted the rules which we have written in the external CSS file. So these rules will be here. Some indented here, so the code will looks readable. So this is we save it, and now check the what effects I'm seeing over here. I think the same effect will be there. Okay, again refresh it, and now we see it. The effect will be same as the effect we have seen in the external CSS tools. Okay, we can see the code of this HTML page. Right click here and view page source. It shows our web pages source code, and see here use the style types, text by CSS, body rules, hash hidings in the sense that div element whose ID is d1. So we can create a d1 element CSS rules, these CSS rules here. When d1 hover, when you mouse over the d1 or say element d, then the rules should be changed, these rules. Okay, so this is our second way by which you can use the CSS in a document, by internal or document wide CSS. Okay, the second one. Now we see third way. Third way is the inline styling. In this inline styling, you are writing the CSS rules over where the HTML tag is written, or where the HTML tag is written. For example, when you, in the body tag in the HTML page, here is a paragraph tag, and each tag has another attribute called style. Style is equal to style, because in the between double quotes you write all the CSS rules you want to apply on this particular element. Okay, all elements should be separated by a semicolon. For example, font size 8 pixels semicolon, background image colon, URL then semicolon. All CSS rules which you want to apply in this particular tag, you write all the CSS rules by semicolon separated way. Property colon value semicolon, property colon value semicolon. This is the third way by which you can use the CSS in the HTML page. For example, we see this here in code. For example, I write something different, say P for paragraph, slash P, write something over some and I can style is equal to background dash color green. Okay, another one more style is color red. Okay, finish, save it, and I refresh the HTML page. Okay, the paragraph is over here, and its background color is green and foreground color is red. This is the third way by which you can use the CSS. Okay, these are the three ways by which you are using CSS in HTML page. First is by as an external style sheet. Second is by document wise
document wide style or internal style sheet, or third is inline style. Okay, these three are the ways by which you are using the CSS in HTML page. Okay, thank you.